Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. I hope आप सब खैरियत से होंगे। Dear students, क्या आपने मैथ्स की वीडियोस देखी और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आओ बच्चों, अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। This is your maths class. Now we will read numbers poem. 1, 2, how are you? 3, 4, wash the floor. 5, 6, touch your lips. 7, 8, open the gate. 9, 10, tiger in the den. Dear students, today our topic is matching three things with number 3. Page number is 20. Yes, the topic is matching three things with number 3. Page number 20. Okay students, look at here. This is page number 20. This is your classwork. Okay, page number 20, and the topic is trace and write 3. There you will trace 3, and these boxes there you will write 3 in proper line. Now look at here. Draw a line from 3 to each group with 3 objects. Color the pictures. It's mean 3 things match with 3. यहाँ पे जो चीज़ें भी 3 होगी उसको हम 3 से मैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3. How many balloons are there? 3. Yes. Now look at here. What is this? Shirts. Now look at here. What is this? Elephant. Yes. Now look at here. What is this? Toys. Now look at here. What is this? Fish. Very good. Okay. Now we will count the things. Then we will match with 3. Okay. Now look at here. How many balloons are there? 1, 2, 3. Now we will match 3 balloons with 3 like this. Yes. Now look at here. How many are these? 1, 2. So we will cross this. Now look at here. How many elephants are there? 1. So we will cross. Just 3 things we will match with number 3. Now look at here. How many toys are there? 1, 2. We will cross this. Yes. Now how many fish are there? 1, 2, 3. Yes. Fish we will match with number 3. And students, कल एक बहुत एहतियात के साथ आप लोग 3 थिंग्स को नंबर 3 के साथ मैच करें और इसको बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट करें। ये आप लोगों का लास्ट वर्क है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैंने एक नोटबुक तैयार की है कि आप लोग नोटबुक के ऊपर 3 कैसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर। सबसे पहले हम कॉपी के बोथ साइड पे मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे लाइक दिस। यस। फिर उसके दरमियान में 2 और लाइन ड्रा करेंगे। यस, लाइक दिस। फिर सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे H.W, इसका मतलब है होमवर्क। फिर डेट डालेंगे और जिस दिन आपने करना है वो डेट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। फिर टॉपिक लिखेंगे नंबर 3, ठीक है। विच नंबर? नंबर 3। ओके। फिर यहाँ हम लिखेंगे 3 और दूसरे साइड पे भी हम लिखेंगे 3। हमारा टॉपिक 3 है तो हम मिड में 3 थिंग्स ड्रा करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल कलर भी करेंगे। जैसे कि मैंने नंबर 1 और 2 में बताया था कि हम जब 3 लिखेंगे तो 1 बॉक्स को हम लीव करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है और 1 बॉक्स मैंने लीव की है। 3rd बॉक्स में मैंने डॉट डाला है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। जहाँ डॉट्स है वहाँ हम 3 लिखेंगे।
लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप 3 लिखेंगे। यस बिल्कुल। और इस तरीके से बहुत प्यारा प्यारा कलर करेंगे। जी बिल्कुल। ओके बच्चों, ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। मोहतरम वालिदैन अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ होमवर्क अच्छे तरीके से करें, अपने बच्चों को टाइम दें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपना होमवर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.